examples in which we are going to conduct multiplication of two matrices. So in this video we are going to continue our examples, in which we are at example number 17. If A is equals to 0 minus 6 7 6 0 minus 8 7 8 0 and B is equals to 0 1 1 1 0 2 1 2 0 and C is equals to 2 minus 2 and 3, then calculate AC BC and A plus B into C, and also verify that A plus B into C is equals to AC plus BC. Okay, so let's just start with A plus B into C. So A plus B, so this is 0 minus 6 7 6 0 minus 8 7 8 0 plus 0 1 1 1 0 2 1 2 0. Now we have to just add this to that 0 plus 0, 0 plus 0, that is 0, 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, minus 6 plus 1 minus 5, 0 plus 0 0, 8 plus 2 10, 7 plus 1 8, minus 2 plus 2, minus 8 plus 2 minus 6 and 0. Okay, now we want to find A plus B into C. So A plus B into C. So what is it? 0 minus 5 8 7 0 minus 6 8 10 0 and multiplication कैसे आएगा? 2 minus 2 and 3. ओके, सो पहले कैसे हो जाएगा ये सारे नंबर्स विद दिस. सो दिस इज 0 0 into 2 0, 7 2 ज़ा minus 14 and 8 2 ज़ा minus 8 3 ज़ा 24. सो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट. नाउ फॉर द सेकेंड, 5 2 ज़ा 10 minus 10 into 0 plus 0 plus 30, and the last one will be 8 2 ज़ा 16 plus 6 2 ज़ा 12 plus 0. So what is the value? Minus 14 plus 24, 10, minus 10 plus 30, 20, and 16 plus 12, that is 28. ओके, सो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास A प्लस बी इंटू सी. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ए सी प्लस बी सी ऑल्सो उन दोनों के इक्वल होना चाहिए. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट टू प्रूव ए सी इंटू बी सी. सो लेट्स जस्ट राइट A इंटू सी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? 0 minus 6 7 0 6 minus 8 7 8 and 0. Now what is the value of C? The value of C will be 2 minus 2 and 3. Okay, so let's just start to multiplication. 0 into 2 0 plus minus 12, 7 3 ज़ा 21, 6 2 ज़ा minus 12 plus 0 plus 24, 7 2 ज़ा 14 plus 16 plus 0. ओके, सो A इंटू सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? minus 12 plus 21, so this is 9, 24 minus 12 12 and the value will be 30. सो ये हो गया हमारे पास ए सी. नाउ लेट्स जस्ट राइट द बी सी. सो बी सी के लिए लिख देते हैं बी, दैट इज़ 0 1 1 1 0 2 1 2 0. ओके, इनटू
2 minus 2 and 3. Yes, 2 minus 2 and 3. Again start the multiplication. So 0 into 2, 0. Minus 2 plus 3. 2 2s are 2 plus 0 plus 6. 2 2s are 2 minus 4 plus 0. Okay, so what is the value? Minus 2 plus 3, 1. 2 plus 6, 8. 2 minus 4, that is minus 2. Now what we have to do? We have to add AC and BC. So let's just add AC plus BC. So 9, 12, 30. ये हो गया हमारा AC. And for the BC we have to add 1, 8 and minus 2. Okay, so क्या हो जाएगा आंसर? 9 plus 1 10, 12 plus 8 20 and 30. This is minus 2. The answer will be 28. Okay, so हमारा A plus B plus into C भी यही आया था 10, 20, 28 and AC plus BC also 10, 20, 28. So hence we verify. Therefore, we can say that A plus B into C is equals to AC plus BC. Okay, so hence we verify. Now move on to next, which is example number 18, in which we have to prove that if A is equals to 1 3 4, 2 minus 2 2, 3 1 1, then show that A transpose minus 23A minus 40I is equals to 0. Okay. This is A cube. So we have to firstly find the value of A cube. So A cube कैसे मिलेगा? When we have A into A into A. ठीक है, सो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? ए स्क्वायर फाइंड करते हैं. ए स्क्वायर के लिए क्या चाहिए? ए इंटू ए करना पड़ेगा. सो दिस इज 1 3 4 2 minus 2 2 3 1 1. ठीक है, नाउ अगेन वी कैन राइट ए, दैट इज 1 3 4 2 minus 2 2 3 1 1. Yes. Now let's just start to the multiplication. Just a second, I just arrange the whole papers. Okay, so a square क्या हो जाएगा? A square will be 1 1 जा 1, first row first column. ठीक है, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12. Yes. फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम. सो दिस इज 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3. नाउ अगेन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. 3 1 जा 3, 3 2 जा minus 6 एंड 4 1 जा 4, 3 2 जा 6 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 1 जा 2, 3 3 जा 9 minus 2 plus 1. Now the last row and columns. 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1. ओके, सो नाउ द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 plus 6 plus 12, दैट इज 19. फर्स्ट में क्या आ जाएगा? 19. ओके, 2 minus 4, 2 minus 4 कितना हो जाएगा? -2. 6 minus 2, दैट इज 4. 3 plus 3 6, 6 plus 2 8, 8 3 minus 6 minus 3 plus 4, so the answer will be 1. 6 plus 4 10, 10 plus 2 12, 9 minus 2 7, 7 plus 1 8, this is 14, this will be 6 and this will be 15. तो ये आ गया हमारे पास a स्क्वायर.
Okay, now we want to multiply this a square with another a. So हमको क्या मिल जाएगा, a cube मिल जाएगा. Okay, so let's just find the a cube. Just a second. Okay, so let's just find the a cube multiplying this a square with a. So a cube is equals to क्या हो जाएगा, a square into a, which gives a square, that is 19 into 1 into 14, 4 into 12 and 6, 8, 8 and 15 multiplied by a. So what is the value of a? 1, 3, 4, 2 minus 2, 2 and 3, 1, 1. ओके, सो ये वैल्यूज़ हो गई. हम यहीं पे लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज पीछे थोड़ा टफ हो जाएगा मल्टीप्लाई करने. 90 इंटू 1 19 प्लस 4 3 ज़ा 12, 8 4 ज़ा 32. नाउ द फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 92 ज़ा 38, 4 2 ज़ा -8, 8 2 ज़ा 16. ओके, नाउ लास्ट वन, 19 3 ज़ा 57, so 57 plus 4 plus 8. Now for the second row, 1 1 ज़ा 1, 12 3 ज़ा 36, 8 4 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, 12 2 ज़ा -24 and 8 2 ज़ा 16, 1 1 ज़ा 1, 12 1 sorry 3 1 ज़ा 3, 12 1 ज़ा 12 and 8 1 ज़ा 8. Now the next, that is 14, 1 ज़ा 14, 6 3 ज़ा 18, 15 4 ज़ा 60, 14 2 ज़ा 28, 6 2 ज़ा -12 plus 15 2 ज़ा 30, 14 3 ज़ा 42, 6 1 ज़ा 6 and 15. So now find the addition. So यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 19 plus 12 plus 32. So it is 63. So let's just write this value, that it will be 63. फर्स्ट में आएगा 63, सेकेंड विल बी 46, 69, 69 -6, 23, 92, 46 and 63. Okay, so these are the values we have find. Now we have to put the equation, that is a cube minus 23a minus 40i. So a cube का वैल्यू लिख देते हैं हम यहाँ पे, that is 63, 69, 92, 46 -6, 46, 69, 23, 63. Okay, now minus 23 into bracket a. So what is the value of a? That is 1 3 4, 2 minus 2 2, 3 1 1 and minus 40 identity matrix. So this is 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1. Okay, so now let's just start to solve this. So सबसे पहले हम क्या करेंगे, 23 को मल्टीप्लाई कर देंगे. So this is 63, 69, 92, 46 -6, 46, 69, 23, 63. Now multiply the 23 into bracket. So प्लस कर देंगे और -23 को मल्टीप्लाई कर देंगे. So -23, 23, 23 2 ज़ा 46, -46 -69, 23 3 ज़ा -69, फिर ये हो जाएगा 46 एंड दिस विल बी -23, -92 -46 एंड -23.
Now again we have to multiply minus 40. So plus minus 40 0 0 0 minus 40 0 0 0 minus 40. Now let's just add all the terms. So first sare, so this is 63 minus 23 minus 40, 46 minus 46 plus 0, 69 minus 69 plus 0, 69 minus 69 plus 0, minus 6 plus 46 minus 40, 23 minus 23 plus 0, 92 minus 92 plus 0, 46 plus minus 46 plus 0 and 63 minus 23 minus 40. सो एज यू ऑल सी यहाँ पे सारी वैल्यूज़ क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है. देखो 63 माइनस 23 40, 40 माइनस 40 0, 46 माइनस 46 0, 69 माइनस 69 0. सो देयरफॉर द होल टर्म्स बिकम 0 0 0 0 0 0 0 0 0. So therefore we can say that is equals to 0. Therefore we have proved that a cube minus 23a minus 40i is equals to 0. Okay, so we will just stop here. In the next video we are going to continue some of the examples and we have started exercise 3.2. Till then, thank you.